You have to be selfish. You have to be selfish, guys. मतलबी बनो, मतलबी बनना ज़रूरी है. I remember a lot of the times when I try to be selfless and I put other people in above me, other people's priority above mine, then somehow, in some shape, way or form, I get hurt. I get emotionally hurt. Why? Because जब भी मैं किसी और की प्रायोरिटी अपने प्रायोरिटी से ऊपर रखता हूँ ना, it seems like universe is trying to redirect to my path using some kind of betrayal, some kind of not appreciating the effort that I put in, taking my time and my energy for value, like taking my time and my energy for granted. ठीक है, ये सब चीज़ें देख के मैंने रियलाइज़ किया यार मुझे तो खुद पे ही काम करना चाहिए. मैं क्यों अपने चीज़ को साइड में रख के किसी और को प्रायोरिटी दे रहा हूँ. ये बात समझो कि when you want to do something truly from deep inside your heart, deep within your heart, one way or the other, you will eventually be able to garner such value, such abundance of value that you will, knowingly or unknowingly, you will help other people. But first, you have to be selfish. You have to fill your own cup. जब तुम्हारा अपना कप भर जाएगा, then you will be able to fill out the other's cup. You will be able to be efficient in order to help other people, in order to put their priority above yours. But then again, when you are putting other people's priority above yours, it has to come from within. Just like, बड़े बड़े नेता होते हैं जो जेन्युइनली देश का भला करना चाहते हैं, IPS ऑफिसर्स होते हैं, अपना नीड, अपना फिज़िकल हेल्थ को साइड में करके, नींद प्रॉपरली ना लेके वो देश की रक्षा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, सॉरी, इन सम शेप वे और फॉर्म. दे हैव डेडिकेटेड देयर लाइफ इन ऑर्डर टू provide value to the society, to the country in the best way that they can. And that's their purpose. That's who they identify themselves with. समझ रहे हो ना ये चीज़? तो वो चीज़ कर रहे हैं ना, वो खुद के अंदर से आ रही है वो, और वो तभी आती है जब तुम खुद का ख्याल रखते हो. पहले अपना कप भरते हो. When you see people who are trying to help other people, just like Mother Teresa used to, just like जो महान आदमी थे, हमारे क्या कहते हैं, गांधी वगैरह, उन्होंने पहले खुद पे काम किया, उसके बाद वो इतने सक्षम बने, 960 है, वो इतने सक्षम बने कि दूसरों की हेल्प कर सके. ठीक है ना? So first step is to help yourself, and then again in the process, in the path, God will tell you, God will give you signs and signals so that you can help the society, the humanity, the mankind, or your fellow mates in some shape, way or form. But the first step is always to be selfish, to be greedy, to always focus your attention in something that you truly like or that you get curious about. That's the first step. वही पहला step है जानी. चलो, I'll see you in the next one.